Okay, friends. Now let us discuss about one of the favorite question in endocrinology for the question paper setters. It is oral contraceptives. It is frequently asked 10 marker question. So it is better to know everything about this oral contraceptives. Mm, First of all, oral contraceptives. What are these oral contraceptives? Oral contraceptives are nothing but the hormonal contraceptions. Like these are the hormones. They can be given in the form of pills. Okay, then what does they include? उसमें क्या क्या होता है? Combined pills, mini pills, post-coital pills. Combined pills में this means it contains the pills with different combinations, mini pills and post-coital pills. Post-coital pills, these are given after the coitus. Then let us discuss about the first group, which is combined estrogen and progestin preparation. Okay, combined combined estrogen and progestin preparations. These are called combined pills. Basically, these are widely used, and it is the most effective reversible method of contraception. In contraception, we have reversible and irreversible method of contraception. So, widely used reversible method of contraception is using the combined pills. Okay, what we have in combined pills? In combined pills, estrogen is used. The estrogen which is used in combined pill is ethinyl estradiol, and commonly used progestins are norethindrone, levonorgestrel, norgestimate, desogestrel, and gestodin. Just remember ethinyl estradiol, norethindrone, and levonorgestrel. These two are enough. काफ़ी है, दो दो याद रख ले, काफ़ी है. तो let us see the different types of hormonal contraceptives. Hormonal contraceptives में ना, like there is oral, parenteral, intrauterine devices. Basically, now what we are going to focus on is the oral type of contraceptive. This oral type of contraceptive, we have combined estrogen and progestin preparations. And progestin means only pill or mini pill contains only progestin. Then we have post-coital contraceptives. These are also called emergency contraception. So अभी हम let us discuss about these three things, that is combined estrogen and combined pills, and only pill or mini pill, and post-coital contraceptives. Okay, now let's see how it works. The combination is synergistic. Synergism means one drug increasing the effect of another drug together. So, in addition, progestin inhibits estrogen induced endometrial proliferation. So, the most important use of progestin is decreasing the risk of endometrial carcinoma. So, okay, I forgot to tell something. In this combined pills, there are three types of pills, especially monophasic, biphasic, triphasic. When we come to monophasic pills, each pill taken throughout the treatment period has a fixed amount of estrogen and progestin. मोनोफेसिक में क्या होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन ए जो है दे विल बी फिक्सेड अमाउंट. बाइफेसिक प्रिपरेशन में क्या होता है? The dose of estrogen is kept constant, but progestogen varies according to the phase of menstrual cycle. Estrogen
कांस्टेंट होता है, लेकिन प्रोजेस्ट्रोजन जो है इनका डोजेस दे विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द phase of menstruation cycle. Let's see what happens in triphasic preparation. The dose of estrogen is slightly more in mid cycle. In the biphasic, estrogen is constant, but here in the triphasic preparation, dose of the estrogen is slightly increased, but dose of progestin increase in 3 successive phases of menstrual cycle. Here what we play with is basically the progestin. Then in the triphasic, we play with this estrogen. Okay, the estrogen content of pills usually ranges from 20 to 30 microgram, and progestin content from 0.1 to 1 milligram. It is 20 to 30 microgram. It is 0.1 to 1 milligram in monophasic pills. Preparation containing less than 30 microgram of estrogen is referred to as low dose pills. This is to be noted. Less than 30 microgram, it is called low dose pills. The progestins, namely desogestrel and gestodine, or norgestimate, are lipid friendly. The progestins we use here are lipid friendly. They are desogestrel, gestodine and norgestimate. As they increase the HDL level and reduce the atherogenic risk. We know the one thing, that is HDL, high density lipids, are good cholesterol, and LDL basically bad cholesterol they are called. So since the HDL level is increased, they reduces the atherogenic risk. They have potent anti-ovulatory effect. Then let's see what happens next. We are here to understand the mechanism of action of combined contraceptive pill. ये जो combined contraceptive pill कैसे काम करते हैं अभी हम देख लेते हैं. पोजीशन 1, दिस पोजीशन 1, यहाँ पे ना both estrogen and progestin act synergistically on hypothalamic pituitary axis by negative feedback and inhibit the release of FSH and NLH, which leads to inhibition of ovulation. Combined pill सबसे पहले they act on hypothalamic pituitary axis. Combined pill जो है they act on hypothalamic pituitary axis by negative feedback mechanism. अगर वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा तो FSH एंड LSH रिलीज बेसिकली कम होगा. FSH LSH अगर कम होगा तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाएगा. सेकेंड वन, दिस इज द सेकेंड पोजिशन, cause tubal and uterine contractions that may interfere with fertilization. क्या होता है ना, ओवरी से यहाँ से एग रिलीज होता है. दिस एग मूव्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब. व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन लाइक यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन या ट्यूबल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन दिस fertilized egg or something, they will just be flushed out, then make the endometrium less suitable for implantation. अच्छा ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया. अगर एंडोमेट्रियम ही सूटेबल नहीं हो तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा. देयरफॉर द फर्टिलाइज्ड एग जस्ट मूव्स आउट. देन थिक viscid and cervical mucus secretion prevents sperm penetration. अगर म्यूकस थिक है तो स्पर्म ऑब्वियसली अंदर नहीं मूव हो पाएगा. This is how the contraceptives, especially the combined contraceptive pills, acts. Okay, अभी हम mechanism of action पढ़ लिया, तो हम ये भी देख लेते हैं like when to use this combined pill. Okay, the combined oral contraceptive is usually started from the first day of menstrual cycle.
मतलब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन से शुरू करता है एंड कंटिन्यू टिल द 21 डे, 1 to 21 days. Reiki, have you heard about Reiki? Like it is said that a habit develops when we do something for 21 continuous day. लेट्स ऐसे ही याद रखते हैं, पहला दिन से 21 दिन तक हम ड्रग्स लेते हैं, मतलब पिल्स लेते हैं. बाद में ना 22 to 28 days इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फ्री पीरियड. मतलब यहाँ पे ना हम पिल नहीं लेते हैं. द नेक्स्ट डे आफ्टर 28 day इज़ टेकन एज day 1. एंड वन मोर थिंग टू बी नोटेड इज दिस कंबाइंड पिल, ये जो ड्यूरेशन है ना, वी कैन take as long as like the period can be taken as much as we need it. Then the combined pill can also be started from the 5th day of menstrual cycle and continued for 21 days by a gap of 7 days. Let us assume we are not comfortable with the first day क्योंकि वहाँ पे bleeding होता है या menstruation होता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. 5 दिन है ना, ये जो फ्लो बंद होने तक वेट करते हैं और बाद में ना 21 days कंटिन्यू कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे भी वी शुड टेक 7 days गैप एंड कैन बी कंटिन्यूड अगेन. इफ ए वुमेन ऑन कंबाइंड ओरल पिल्स फेल्स टू टेक टैबलेट्स, शी शुड टेक 2 tablets द नेक्स्ट डे. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. मान लो आज 3rd है, भाई कुछ वर्कलोड और समथिंग हम भूल गया, तो हम 4th डे पे 2 tablets should be taken. And next prescription continues. If she misses more than 2 tablets, she should stop treatment. Use alternate method of contraception. अगर मान लो एक कोर्स में ना 2 पिल मिस किया, तो अभी she should not continue. She should go for alternate method, or else ये जो contraception है ना वो फेल हो जाएगा. चलो अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखते हैं कंबाइंड पिल्स का. Contraindications of combined oral contraceptives. Absolute contraindication. Absolute मतलब जब भी थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स होता है या मैलिग्नेंसी ऑफ जेनिटल डिसऑर्डर्स लाइक ओवेरियन कैंसर या समथिंग वैसे कुछ होता है, या जो ले रहे हैं वो अगर सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, या उनको कुछ कार्डियक डिसीज़ है या पोर्फायरिया है या एक्टिव लीवर डिसीज़ है, तो वो ये सब ले ही नहीं इनका. रिलेटिव contraindications मतलब समटाइम्स ओबेसिटी पीपल और डायबिटीज़ पीपल विथ माइग्रेन और माइल्ड हाइपरटेंशन और यूटेरिन फाइब्रॉइड, ये सब लोग हैं ना जिस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लेना है. जो दिस इज़ द शेड्यूल एज प्रीवियसली देखना है यहाँ पे, वी कैन सी दैट द एफिकेसी इज़ 98 to 99.9%. Still be there are some chances of failure, but it is very that is negligible. यहाँ पे जो बताया गया है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग 1 tablet orally for 21 days. अगर बीच में मिस हुआ तो नेक्स्ट डे 2 पिल लेना है, लेकिन अगर 2 times से ज़्यादा मिस होता है तो छोड़ देना है. ऑलवेज देयर शुड बी ए गैप ऑफ 7 days. रिपीट द कोर्स टिल द रिक्वायर्ड. Okay, in this video we discussed about the combined pills. In next video we will talk about the mini pill as well as postcoital pill.